She's pointing towards you. Okay. What is the fingerprint? I'm asking you something. What is the fingerprint? बोलो. असं काय दाखवतोय? बोल ना यार. Why are you not expressive? Huh? What do you mean by? मराठी में बोलो ना. What is the DNA fingerprint? What is the fingerprints of? Huh? बोल दस. It is an impression, right? Can I say it is the impression of your fingers? That is called the fingerprint. आप अपने fingers का क्या लेते हो? एक छापा लेते हो. Okay? Why? Why do you do that? Yes, that is the right word. The word is that it is unique for every individual. What is unique to every individual? Your fingerprints. Even monozygotic twins, those who have come from a single zygote, they differ in their fingerprints. Even though they both have the same DNA fingerprint, but their hand ka fingerprints are different. Okay? So the right word is, what is the right word, Vishnu? Uniqueness. Can I use the uniqueness to identify a person? Yes. Similarly, in DNA fingerprint, we try to identify the uniqueness that is there in every individual's DNA. That is the basis of the DNA fingerprint. तो हमारे DNA में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर एक इंसान के लिए क्या है बच्चों? यूनिक है, और वो इंसान उससे पहचाना जाएगा. अब ये जो लेक्चर होगा उसमें ये सिखाया जाएगा आपको कि डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दिखता कैसे, और आप दो इंडिविजुअल को कैसे क्या कर सकते हो चलो आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसके बारे में बात. हाँ, लेकिन वो सबके बेसिक बैकग्राउंड हम सबको मालूम होना चाहिए about the DNA. The DNA shows the presence of two peaks. One is the genomic DNA. It is that DNA which is the one which is going to code for proteins. Okay, and the other DNA is the non-coding sequences. These are the repetitive DNA, and that is called as the what DNA bachlo? It is called as the satellite DNA. I hope you got my point. And this satellite DNA shows the presence of different types of satellites, like microsatellites and mini satellites. Okay, and one of them is called as the variable number of tandem repeats, or VNTRs. मैं 100% श्योर हूँ कि आपको इसमें कुछ भी नहीं समझा है, तो आप फालतू में हाँ हाँ का एक्टिंग मत करो. ठीक है, काफी लोग ऑलरेडी मेरे को प्रोत्साहन दे रहे हैं की ह्या मनुष्याला आमचं मनोबलाची खूप गरज आहे, तो लोग पूर्ण मुंडी हिला हिला के बता रहे हैं. और मुझे पता है मुझे कुछ भी नहीं समझा तुमको, तुमको सिर्फ इतना ही समझा अभी तक. मैं बता रहा हूँ तुमको डीएनए मध्ये दोन गोष्टी असतात. एक जे प्रोटीन बनवतं त्याला म्हणतात जिनोमिक डीएनए, आणि दुसरा काहीतरी अलतं भलतं बोलतोय जो ते अजून मला समजलं नाहीये त्याला म्हणतात सॅटेलाइट. एवढं प्रत्येकाला समजलंय, बरोबर आहे? So let me focus on this alta bhalta that I am talking about. Let us take two individuals. किसको किसको लेना है आप बताओ? हाँ? अरे no, means confused होना. Siddharth. Give me something easy. Like in Bombay, I use these two people.
One is George and the other is John. Don't forget. Okay? One is George and the other is John. What's the other? Huh? So I'm talking about two people. Who? George and then John. Why is Omkar so happy? You know them both? Huh? Now, let me see chromosome number 1 of Mr. George and chromosome number 1 of Mr. John. Let me see the chromosome more closely. Just help me. What are you going to help? Ah. Who is this? Widow. This is chromosome number 1 of George. Do you see it has narrowed over there? Do you agree with me? It has narrowed over. Why is there? This is called primary constriction 1. What do you call it? Primary constriction 1. And do you see there are two proteinaceous disc-like structures around it? These are called kinetochores. So this is called as the centromere. I hope. And you already knew this. And do you see there is one more constriction? Or no? Yes. And that is called as the secondary constriction. Did you agree with me? Yes. And beyond the secondary constriction, there is repetitive DNA. There is repetitive DNA. काय आहे? Repetitive DNA. Okay. And that region is called as the satellite region. What do you call the region? Satellite region. It is having dash DNA. Repetitive DNA. Look here, guys. Do you see that a sequence GC has repeated itself? Yes. How many times? 4 times. Okay. So can I say it is repeating itself in short sequences? आया ना? इसको बोलते हैं short tandem repeats. क्या बोलते उसको? Short tandem repeats. एकदम short. If it will repeat itself, say around 100 times. How many times? 100 times. Can I say it is a little bit larger? It is called variable number of tandem repeats. काय म्हणायचं त्याला? Variable number of tandem repeats. Goes to. Tandem repeats समजलं? Tandem repeats. What is a tandem repeats? Okay, the sequences are repeating themselves. That is why they are called as Tandem repeats. tandem repeats. Okay? And if I see the chromosome number 1 of John, look, is his DNA showing the presence of tandem repeats? Yes. Are they repeating in the same number or different numbers? Different number. So are they same number of tandem repeats or variable number of tandem repeats? Variable. Sir. Now I am interested in chromosome number 5 of George. Chromosome number 5. And there in the satellite region I see GC is repeating 2 times. And in the case of John and the chromosome number 5, the GC is repeating itself 200 times. So tell me, these repetitive sequences, do they repeat themselves in the same number or variable numbers? Variable numbers. And is this variable number same between me and you? No.
So everybody has got a unique variable number of or these repetitive sequences. आया समझ? तो सेकेंड टाइप कौन सा डीएनए बच्चों लोग? सैटेलाइट डीएनए. देखो ये वाला कौन सा डीएनए? अब समझ में आया सैटेलाइट डीएनए? आया ना? जिसके अंदर क्या होते हैं बच्चों लोग? रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं. उनके लेंथ के हिसाब से या तो आप उसको बोल सकते हो माइक्रो या तो आप उसको बोल सकते हो मिनी. क्या बोल सकते हो? माइक्रो या फिर उसको बोल सकते हो मिनी. आई होप यू गॉट माय पॉइंट. और उनका दूसरा नाम क्या है? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. क्या होता है उसको? Variable number of tandem repeats. The VNTRs, the mini satellites, are also called as what? Variable number of tandem repeats. And the micro satellites are called as short tandem repeats. क्या होता है उसको? Short tandem repeats. I hope you got my point, everybody. I hope you got my point. So does everybody have the same number of short tandem repeats and variable number of tandem repeats, or different? Different. And for every individual they are going to be unique, and we are going to use this unique variable number of tandem repeats as a basis for DNA fingerprinting. Are you still confused? So in every individual DNA there are certain sequences which are going to dash themselves. And these repetitive DNA sequences are the basis of a technique called as DNA fingerprinting. Are they found on the main chromosome or the ends? Ends. Which region? जो छोटे हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रो सैटेलाइट्स या शॉर्ट टैंडम रिपीट. जो उससे भी थोड़े बड़े हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिनी सैटेलाइट्स या वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. आया लक्षात आया तुमको? आया ना? तो अगर मैंने जॉर्ज का डीएनए देखा तो उसके वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स कितनी बार रिपीट कर रहे थे? 4 बार. इसी कितने बार कर रहे थे? 7 बार. तो हर एक इंडिविजुअल का उस लोकाई के ऊपर वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट सेम नंबर में होगा कि अलग अलग नंबर में होगा? और उसी को हम लोग यूज करेंगे फॉर DNA fingerprint. Okay, so what is the unique thing in everybody's DNA? The repetitive sequences. मेरे क्रोमोसोम नंबर 1 में जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होंगे क्या वो जोशी के साथ मैच करेंगे? नहीं. मेरे जो सीक्वेंसेस होंगे वो 50% मेरे डैड के साथ, 50% मेरे मॉम के साथ मैच करेंगे. जोशी के उसके मॉम और डैड के साथ मैच करेंगे. आया बात समझ में? क्योंकि मैंने जो डीएनए इनहेरिट किया है, मैंने ऐसे कितने क्रोमोसोम इनहेरिट किए? 2, मतलब 23 पेयर्स. आया ना? उसमें एक क्रोमोसोम का जो डीएनए मैंने पापा से लिया, दूसरा क्रोमोसोम का डीएनए मैंने किससे लिया? मम्मी से लिया. तो मेरा जो VNTRs है 50% किससे मैच करना चाहिए? डैडी से. 50% किससे मैच करना चाहिए? मम्मी से. So as a geneticist, आपके पास एक केस आया. आपके पास कौन आया? जहां पे बबल राव बोल रहे हैं कि ये जो बबलू है ये मेरा बेटा नहीं है, और बबली जी बोल रही है कि नहीं ये आपका ही बेटा है. प्रॉब्लेम समझ आला झाला? ह्याला अंग्रेज लोक म्हणतात डिस्प्युटेड पॅरेंटेज. काय म्हणतात? Disputed parentage. बबलराव काय म्हणतात? हा मुलगा माझा. आणि बबली देवी काय म्हणतात? हा मुलगा तुमचा. आणि मुलगा कोण आहे? बबलू. बबलू बोलतो अरे जो भी है पैसा वाला उनको लेके जाओ, जो आईफोन दे सकता है मैं उसका. आजकल का बच्चों को ऐसे ही होगा. अब ये सब किसके पास आया बताओ? डॉक्टर वेंडू के पास, जो मिरज सांगली कोपड़ रीजन के बहुत बड़े जेनेटिस्ट हैं. कौन, क्या नाम उनका? डॉक्टर वेंडू. ओके, तो डॉक्टर वेंडू ने क्या किया बच्चों? उन्होंने बबल राव का डीएनए फिंगरप्रिंट लिया,
बबली देवी का डीएनए फिंगरप्रिंट लिया, बबलू का डीएनए फिंगरप्रिंट लिया और देखा कि बबलू के VNTRs 50% किससे मैच कर रहे हैं और 50% हैप्पी एंडिंग है, हैप्पी एंडिंग नोट किसे बबल था। तो बोल संपला विषय संपला, चर्चा नको। ओके बबल राव, वी कांट डिनाई दिस बबलू इज योर सन। तो ये मैं सिखाऊंगा कि डीएनए फिंगरप्रिंट कैसे की जाती है। आप लोगों ने कभी आप सीआईडी या कोई दूसरा क्राइम फोरेंसिक में देखा है डीएनए फिंगरप्रिंट्स? सीआईडी में तो दिखाते हैं ना वो लोग। ठीक है सर, पुढे जाऊया आपण हळूहळू लाइफ हैज टू प्रोसीड। ओके फर्स्ट स्टेप for any DNA fingerprinting experiment is isolation of the DNA. So let's start the crime scene. I like crime scene. You like crime scene? Yes. What is the crime? Murder. Okay, see. Yeah, still better. Murder. एक मर्डर हुआ है, किसका मर्डर हुआ है? हाँ? Let us be gender neutral. एक इंसान का मर्डर हुआ है, उसका जेंडर नहीं बताएंगे हम, जेंडर न्यूट्रल रहेंगे, यहाँ पे मेल फीमेल ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके नाखून बड़े बड़े हो चुके, नाखून बड़े बड़े हैं, वो जो विक्टिम है उसके नाखून बड़े बड़े हैं और वो मरने से पहले झटपट हुआ था बहुत, तो वो झटपटी मध्ये उसके नाखून के अंदर ड्राइड ब्लड है उसके किलर का, मर्डर। झटपट हुआ था तो ड्राइड ब्लड मिला अपने को कहाँ पे? नाखून के। अब केस किसके पास आई? मेंडू तो लास्ट में आएगा, मेंडू दूसरा केस सॉल्व कर रहा था, डॉक्टर सालुंकी के पास आया। वही तो है ना साइंटिफिक, एक लाइफ इकॉन ऑफ साइंस, डॉक्टर सालुंकी। ओके सो व्हाट डिड यू डू बच्चों? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू विल डू? You will take the blood sample and from the blood sample you will go for the red blood cells or the white blood cells? Red blood cells. Very good. I'll clap for you. Red blood cells will be used for isolation of DNA. Who was that Pandit who said that? Huh? You moron, obnoxious dimwit. Never was that. Okay. What will you go for? White blood cells, because red blood cells don't have a nucleus. How are you going to isolate the DNA from that? So you'll go for what bachalo? White blood cells. You will break open the nucleus, okay, and then from that test tube you will isolate the DNA. क्या isolate करोगे बच्चों? DNA. Okay. In biotechnology, so I will tell you the exact method. I might show you also in a test tube. Okay. Isolation of DNA किया, किसमें किया कुछ लोग? एक टेस्ट ट्यूब, किसमें से? व्हाइट ब्लड सेल्स। आया समझ में? ओके नाउ किड्स, द सेकंड थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल digest that DNA with an enzyme which is called as restriction endonuclease. क्या कहते हैं एंजाइम्स को? Restriction endonuclease. Restriction endonuclease. This is called as restriction digestion. क्या कहते हैं इसको? Restriction digestion. In biotechnology, you'll be given more on this. Just to give you a hint, बच्चों, ये DNA का सीक्वेंस है। कौन है ये? DNA का सीक्वेंस। There are certain enzymes which can cut the DNA at certain specific sites. They can cut the DNA at certain specific sites. These sites are called recognition sites. What do you call them? Recognition sites. Such an enzyme which cuts the DNA at certain recognition site is called as a restriction enzyme. What do you call it? Restriction enzyme. Restriction enzyme. So we have DNA molecules
एक ह्यूमन सेल है, क्या है? Human cell. उसको जब आप एक रेस्ट्रिक्शन, अच्छा ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। मतलब डीएनए भी कितने होंगे? 46। हाँ या ना? तो जब आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उन डीएनए को कट करोगे तो आपको 46 पीसेस मिलेंगे कि बहुत सारे पीसेस मिलेंगे बच्चों? बहुत सारे, क्योंकि एक डीएनए उसको मैंने कट किया, कट कट कट, दूसरे को किया कट कट कट, ऐसे बहुत सारे क्या मिलेंगे बच्चों लोग? डीएनए के फ्रैगमेंट्स, एंड दैट इज कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन डाइलेशन। तो मैंने जॉर्ज के डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या किया बच्चों लोग? क्या किया बोलो ना, क्या किया बच्चों लोग? कट किया। सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, व्हाट डू यू सी दैट द फ्रैगमेंट्स हैव बीन कट इन सेम लेंथ और डिफरेंट लेंथ्स? Got my point? And this is called restriction fragment length polymorphism. क्या होता है इसको? Restriction fragment length polymorphism. That is called RFLP. क्या नाम है इसका? RFLP. इसको अपन ऐसे हिंदी में बोलेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से सब डीएनए को आप कट करोगे तो आपका फ्रैगमेंट का जो लेंथ होगा वो अलग अलग होगा। कोई कोई फ्रैगमेंट्स होंगे बड़े, कोई कोई फ्रैगमेंट्स होंगे छोटे, उसमें से कुछ फ्रैगमेंट्स होंगे वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, जो अभी मुझे ऐसे आंखों से दिखाई नहीं दे रहे। अलग लक्षण में कैसे दिखते? अलग लक्षण कि भी जॉर्जचा डीएनए घेतला, किती डीएनए होते? 46। त्या डीएनए वरती कोणते एन्झाइम्स ऍक्ट केले? रेस्ट्रिक्शन एन्झाइम। मग आता या 46 डीएनए चे किती तुकडे झाले? हजारो। काही तुकडे मोठे, काही तुकडे छोटे. So now I have got thousands of pieces of DNA. Some of them are small, some of them are big, and some of the pieces which I can't see belong to variable number of tandem repeats which are unique to George. Hayana, don't you think I need to visualize them? Visualize whom? Loudly the way? Tandem repeats. I need to visualize them. मला बघायची गरज आहे कोणाकडे? आणि मग I'll come to know हा डीएनए फिंगरप्रिंट आहे कोणाचा? जॉर्जचा. आहे ना? तर मी तिकडे उभा राहणार, बोलणार ए विएटर जॉन उभे राहा सर्व. So they stand up? No. I need to have a technique to visualize it. Are you getting my point? Yes or no? So what is the first thing we did? Isolation of DNA. From the sample, you took the cell, you took the nucleus, you broke the nucleus. What came out? DNA. You cut the DNA with what? Restriction enzymes. This is called restriction digestion. As a result of which you got fragment of same length or different length? Different length. This is called restriction fragment length polymorphism. Now out of this, there are some fragments which are variable number of tandem repeats. Shall I continue? Are you all comfortable up to here? The next thing that I'm going to do is I am going to perform a technique called gel electrophoresis. Okay? Where I am going to separate the DNA fragments on an agarose gel under an electric charge. क्या बोला मैंने? I am going to bring about the separation of RFLPs on an agarose gel under an what electric charge. You getting my point, everybody? What is RFLP? Well, are these RFLPs? Give me yes or no. Yes. And some of the RFLPs are what? Variable number of tandem repeats. Okay. So what can I write over here? What is gel electrophoresis? Separation of DNA fragments
on a agarose gel under an electric charge. But these DNA fragments belong to whom? The restriction fragment layer polymorphism, जिसको मैंने क्या किया, restriction से कट करके तैयार. I hope you are understanding what is going on. So now what I do is I take an agarose gel. क्या लिया मैंने बच्चों? agarose gel. And एक साइड पे मैंने नेगेटिव और दूसरे साइड पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स लगाए, बराबर. और यहाँ पे ये जेल है, जेल जिसके अंदर मैंने एक वेल बनाया. क्या बनाया? वेल मतलब खड्डा. ओके. एंड आई loaded all the RF LPs into the well and switched on the current. What my point? Why did I do that? Because DNA is negatively charged. DNA is negatively charged. So will it? What is negatively charged? Anode or cathode? No. And positively charged is? Cathode. So I have loaded it towards the anode. So it will run towards the Cathode. But you know, the agarose gel का जो pores होते हैं ना, उनका साइज बड़ा छोटा ऐसे रहता है. तो जो फ्रैगमेंट्स का साइज छोटा होगा वो दूर तक भागेंगे कि नजदीक तक भागेंगे? दूर तक. अरे भाई, ये अपनी जुई है और मैं, साइज के हिसाब से अगर हम दोनों को भगाया जाए तो दूर तक कौन जाएगा? जुई जाएगी. ऐसा हम जो नहीं भाग पाएगी मैंने ज्यादा, लेकिन इसको कंसीडर कर. ओके. तो जो फ्रैगमेंट छोटे छोटे होंगे, कैसे होंगे? छोटे छोटे होंगे. विल दे रन टिल द एंड बच्चों? यस. गिव मी यस और नो? Yes. यस और नो? Yes. So can I say I have got separation of the DNA fragments on an agarose gel under an electric charge, and this is called what bachlo? Gel electrophoresis. Did you get my point, everybody? Give me yes or no, morons. So can I say I've got bands of DNA? Give me yes or no. Yes. Can I see those bands? No, not yes. I can't see them. But my point? Now I give an alkali treatment. कौन सी कली? अल्कली. तो जैसे ही मैंने दिया उसको कौन सा ट्रीटमेंट बच्चों? अल्कली ट्रीटमेंट. सी व्हाट हैपेंड. My double stranded DNA, it became single stranded. अब मैंने थोड़ा सा फ्रैगमेंट्स बढ़ा दिए, समझ गए ना आप लोग? लेकिन मेरी बात कि जो डबल स्ट्रैंडेड था टूट के क्या बन गया? चलो सिंगल स्ट्रैंडेड. क्योंकि मैंने कौन सा ट्रीटमेंट दिया यहाँ पे? अल्कली ट्रीटमेंट, जिसने वो डबल स्ट्रैंड को क्या कर दिया? सिंगल स्ट्रैंड. आई होप यू गॉट इट एवरीबॉडी. अब आगे जो टेक्निक करना है ना, उसके लिए ये जेल को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट है. What my point? So you know what I did? I took a nitrocellulose membrane. क्या लिया मैंने? Nitrocellulose membrane. Nitrocellulose membrane. And I placed it on the agarose gel. क्या किया मैंने? Placed it on the Agarose gel. तो उसने वो जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था ना, उसको एब्जॉर्ब कर लिया, ब्लॉट कर लिया. जब अगर इंक गिर गए ना तो तुरंत ब्लॉटिंग पेपर लेकर उसको लगा देगा. वो पूरा शाई को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है. तो ये जब मैंने नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन यहाँ लगा दिया, किस पे? अगारोज जेल पे, तो जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए थे अभी वो जेल पे रहेंगे कि मेरे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे आ गए? Nitrocellulose membrane. आगे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे सी ऐसे आ गए. किस पे आ गए बच्चों? नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन. ठीक है? किस पे आ गए? नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन. अब इसके ऊपर जेल के ऊपर दिख रहे तुमको? ना, क्योंकि वो सब कहाँ आ गया? इसके ऊपर आ गया. किसको दिख रहा है इसके ऊपर?
किसको किसको दिख रहा है? हाँ, किसी को नहीं दिख रहा है, अच्छी बात। ये सब किसके ऊपर आ गया? दिस वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट नेम E.M. सदन। क्या नाम है उसका? E.M. सदन। That is why this is called as southern blotting। क्या होता है उसको? चलो, Southern blotting। इसके बाद वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्दर्न सब है। मजाक नहीं कर रहा, मजाक का बात है दोस्तों, मजाक नहीं कर रहा मैं। आपको समझ में आ रहा है सबको? तक समझ में आ रहा है तेरे को? इधर उसको ढूंढने की जरूरत नहीं। अब इसमें से कुछ कुछ फ्रैगमेंट्स जो है, आर दे वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स? गिव यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसमें से कुछ कुछ फ्रैगमेंट्स कौन है? टैंडम रिपीट्स, जो जॉर्ज के लिए क्या है? यूनिक है। लेकिन अभी मुझे दिख रहा है क्या वो? तो डोंट यू थिंक आई नीड टू विजुअलाइज देम? यस और नो? For that, I'll use a probe. It is a single-stranded, radioactively labeled DNA, which is complementary to the VNTRS. Which is complementary to the VNTRS. So if I know that the VNTRS has a sequence GC, GC, GCA, I will have a probe which will be complementary to it. What my point? So I'll have radioactively labeled single-stranded DNA molecules, which are called as what? Probes. Probe मतलब ढूंढ के निकालने वाला। Probe का मतलब क्या होता है? ढूंढ के निकालना। The police is probing the case, मतलब investigate करने वाला। So probe का मतलब क्या होता है? जो ढूंढता है, investigate करता है। अब यहाँ पे किसका इन्वेस्टिगेशन करना है अपने को? अरे बोलो ना, मुझे समझ में आ रहा है। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम। तो इसके लिए हम लोग ने लैब में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स को डिजाइन किया या दूसरे एनिमल से उसको आइसोलेट किया, उनको रेडियोएक्टिवली लेबल किया, जो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट से क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। आई होप यू गॉट इट। एंड नाउ वी ब्रॉट अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। What did we bring about, Uchilo? Hybridization. What do you mean by hybridization? You allow the probes to bind to whom? To the single-stranded DNA on the nylon or the nitrocellulose membrane. Ayana, give me yes or no? Yes or no? So as a result of which हमारे पास क्या था? पूरा सीक्वेंस था ना? किसका सीक्वेंस था वो? चलो, वेरिएबल ये सॉरी रेस्ट्रिक्शन, फ्रैगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म, सब एक ही लाइन में थे कि सब सेपरेट हो चुके थे? सेपरेट हो चुके थे ना, ऐसे सब ऐसे क्या हो चुके थे वो? चलो, सेपरेट हो चुके थे। अब जब जैसे मैंने VNTR लगाया, वो जाके बाइंड हो गए ना VNTRs, प्रोब्स सबके साथ बाइंड हो गए कि जहां जहां VNTR होंगे उधर ही जाके बाइंड होगा? वही जाके वो क्या होगा? बाइंड होगा। Are you following what I am saying? Yes or no? Okay. The next thing is I will place this. I will place this. Place what? What is this? Nitrocellulose membrane on an X-ray film. On whom? X-ray film. What is X-ray film? मार्क्स नहीं मिल रहा, 2 पैसे का नोटबुक पूरा भर के रखी है। ये कौन है? नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन। और ये जो ब्लू रेड है वो कौन है? VNTR से वो बाइंड हो चुका है। अब ये मैंने नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन को कहां किया? उसके ऊपर प्लेस किया। किसके ऊपर? एक्सरे फिल्म। अब वो रेडियोएक्टिवली लेबल्ड है ना, तो एक्सरे फिल्म पे मार्क्स करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? कौन मार्क करेगा? वो रेडियोएक्टिव लेवल पोर्ट जो VNTR के साथ मार्क हुआ है। तो अब देखो, मैंने उसको यूवी लाइट में देखा। किसमें देखा? यूवी लाइट। तो एक्सरे फिल्म ग्लो करेगा कि नहीं? क्या ग्लो करेगा?
ऐसे बारकोड लाइक पैटर्न दिखेगा। क्या दिखेगा? बारकोड लाइक पैटर्न। जैसे डीमार्ट में खरीदते हो वो बारकोड आता है, वैसे एक बारकोड लाइक पैटर्न दिखेगा। और ये जो बारकोड लाइक पैटर्न है वो जॉर्ज का क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंट। अब बाजू में जॉन का मैंने बनाया बारकोड लाइक पैटर्न वीएनटीआर, वो सेम रहेगा कि अलग रहेगा बच्चों? क्योंकि उसके वीएनटीआर क्या है? अलग है। उसका आरएफएलपी क्या है? अलग है। तो ये किसका रहेगा? और ये किसका रहेगा? वैसे ही मेरा ले लो, मेरा बारकोड लाइक पैटर्न जोशी के बारकोड पैटर्न में जो मैच होगा कि नहीं? आई होप यू अंडरस्टूड। लेकिन अभी समझो आपके डैडी है, उनका वीएनटीआर है, आपकी मम्मा है उसका वीएनटीआर है, और आपका वीएनटीआर है, तो आपके 50% वीएनटीआर किससे मैच करेंगे? डैडी। ये आपके डैडी का वीएनटीआर है, ये आपके डैडी का डीएनए फिंगरप्रिंट है। किसका डीएनए फिंगरप्रिंट है? डैडी का। ये लिखा मैंने डैडी। और ये आपकी मम्मा का है, ये है आपकी मम्मी, और ये है आप सैड डिप्रेस्ड। ओके। अब आपके कुछ वीएनटीआर जो हैं खुद के यूनिक भी होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन काफी सारे वीएनटीआर देखो, ये दो किससे मैच किए? डैडी के साथ। ये दो किसके साथ मैच किए? मम्मा के साथ। ये दो किसके साथ मैच किए? डैडी के। तो 50% किसके साथ मैच करेंगे और 50%? तो इसका मतलब आप उन दोनों की संतान हो। आई होप यू अंडरस्टूड। So every individual will have his own unique barcode-like pattern, and that barcode-like pattern is the DNA fingerprint of that particular individual. तो जब मैं इंक के अंदर मेरी फिंगर डुबाता हूं और पेपर के ऊपर ऐसे रखता हूं, तो वो मेरा क्या है? फिंगरप्रिंट है। और जब मैं ये पूरी प्रोसेस करता हूं और मेरा ये बारकोड लाइक पैटर्न मिलता है, वो मेरा क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंट है। और वो किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ मैच नहीं, क्योंकि मेरा अगर बारकोड ऐसा है तो किसी सामने वाला का बारकोड ऐसा नहीं होगा, उसका पैटर्न कुछ अलग। आपने डीमार्ट में एक वस्तु खरीदा, उसका बारकोड अलग होता है, वही दूसरा वस्तु खरीदा, उसका बारकोड, दो वस्तु का बारकोड मैच नहीं। Until and unless if you are monozygotic twins. So like we got twins over here, Siddharth and Siddharth. I don't know whether they are monozygotic or dizygotic. So if I do their DNA fingerprint and if it exactly matches, it means that they are monozygotic. If it doesn't match, then they are dizygotic. Because monozygotic twins come from a single zygote, single sperm, single ovum. वो मोरूला बनने के बाद स्प्लिट होता है, याद है? पहले बताया था मैंने आपको। तो उनका दो ट्विंस का डीएनए फिंगरप्रिंट अगर वो मोनोजाइगोटिक है तो क्या होगा? सेम होगा, डाइजाइगोटिक का अलग होगा। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। डिड यू अंडरस्टैंड? दिस होल टेक्निक इज कॉल्ड, आर यू एबल टू विजुअलाइज इट? सो कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन ऑफ loudly, visualization of, you're not giving me the right word. It is the visualization of, loudly, variable number of which belong to which part of the DNA? Repetitive sequences in the satellite DNA. I hope you got it. Where every individual has his own unique variable number of tandem repeats. तो ये टेक्निक डेवलप किया था एलेक जेफरीज ने। किसने? एलेक जेफरी। क्या नाम था अंकल का? अलग नवे, एलेक जेफरीज। ओके, थोड़ा लिख लो, फिर एक ब्रेक के बाद, ब्रेक मतलब थोड़ा गैप के बाद फिर उसको रिवाइज करना। जस्ट राइट इट डाउन एंड देन आई रिवाइज इट अगेन। ओके, Kasim, just you did. What happened to you? Why?